अभी दीपक जी इंग्लिश की कक्षा में किस प्रकार से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा सकते हैं, खेल खेल में किस प्रकार से बच्चों की जो शब्दकोश है उसको बढ़ा सकते हैं, और इंग्लिश में भी किस प्रकार से विभिन्न सहायक सामग्री हम प्रयोग कर सकते हैं, इस कक्षा में दीपक जी समझा रहे हैं। A very warm. Can you hear me? Yes. Yes. Thank you. Well, my name is Deepak Sharma. A very warm and pleasant good evening to each and everyone. ये आपके स्टूडेंट्स भी एकदम सही है। अभी आपकी आवाज नहीं भी आ रही तो यस बोल दिया। Actually, they all love me so much. Well, my name is Deepak Sharma, and I am going to conduct some activity. So many times this word has been spoken, that experiential learning. I am a bit nervous, so initially my voice can be a bit shaky. I hope you will cooperate. So what I was feeling basically, we all keep on doing activity whole day. Now you all are sitting. This is an activity. There are so many people sitting, but they are not comfortable. So somebody is moving this way, somebody is moving that way. They are adjusting. So that is called activity. These all the students, they are sitting. They have been asked to come at 4 o'clock. First of all, they had a practice session. After that, they have been sitting here. These all the people as well. Our honorable principal sir comes over here at 4 o'clock in the morning. Sometimes it gets 12 o'clock. Then he goes back to home. We all the people, we are working hard. So what we are doing? We are gaining experience. This is very, very important. So it's getting a bit. Let's make it light. I want to share one joke first of all. You know, Japanese people, they don't use English language. They use their own software, own language. तो एक बार जापान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, he had to meet Mr. Barack Obama, and this was the very first time he was meeting. पहली मुलाकात थी. So he said that I speak Japanese, Barack Obama ji speaks English. How would I communicate? इंडिया में हमारे यही प्रॉब्लम है. बच्चा बीटेक कर लेता है, एमबीए कर लेता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बात नहीं कह पाता, टीचर से नहीं कह पाता, माँ बाप से नहीं कह पाता, वाइफ तो सुनती नहीं वैसे भी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनके साथ. तो अभी क्या होता है कि वो कहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कुछ तो करना होगा, आई विल हैव टू डू समथिंग. सो ही हायर्स अ ट्यूटर एंड ही सेज प्लीज ट्रेन मी, मुझे सिखाइए हाउ वुड आई कम्युनिकेट. ही सेड सर आपको तो ट्रांसलेटर मिलेगा, ट्रांसलेटर विल टॉक. ही सेड नो, मीट एंड ग्रीट एट लीस्ट. कहते ठीक है, तो वो उनको सिखाते हैं सर डोंट डू एनीथिंग, सिंपली गो देयर एंड डायरेक्टली गो, हैंडशेक एंड से हेलो सर हाउ आर यू. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ओबामा जी है वो रिप्लाई करेंगे दैट आई एम फाइन थैंक यू एंड यू. तो आपको बस बोलना है मी टू, मैं भी सर. उसके बाद ट्रांसलेटर आ जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम इजी, रिलैक्स. तो रट लेते हैं हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू. अब रट तो लेते हैं, लेकिन वही ना बचपन में आप सबने कहानी सुनी होगी कि बहुत अच्छे से ऐसे याद किया था माई बेस्ट फ्रेंड का, ऐसे आ गया फादर का, अब लिखना पड़ा. तो जहां जहां बेस्ट फ्रेंड आ रहा था वहां वहां फादर कर दिया और लिख दिया राम प्रसाद इज माई बेस्ट फादर. आई हैव मेनी फादर्स बट राम प्रसाद इज माई बेस्ट फादर. ऑल द टीचर्स लव हिम, माई मदर आल्सो लव्स हिम, ही इज वेरी नाइस. तो बस जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर चढ़े स्टेज पे, सामने से बराक ओबामा आ रहे थे, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट वॉक पे चल रहे थे, नर्वस थे मेरी तरह, लेकिन चल रहे थे. बहुत जल्दी जाके बोला हेलो सर हु आर यू. अब हाउ रिप्लेस हो गया हु से और सेंटेंस का मतलब बदल गया. बराक ओबामा ही वाज टेकन अबैक, ओ माय गॉड व्हाट ही इज आस्किंग. ही सेड ही इज आल्सो सो फनी, जॉली बाय नेचर. उनकी वाइफ खड़ी थी मेरे मिचेल ओबामा एंड ही सेड ओ मी आई एम द हस्बैंड ऑफ मिचेल ओबामा. और उसके बाद जो रिस्पांस आया जापानी प्रेसिडेंट का वो कमाल था, वो था मी डू. So sometimes cramming can really be dangerous. ये बड़ा खतरनाक हो सकता है. तो एक्सपीरियंसेस अच्छे हो, खूबसूरत हो, बहुत अच्छी सी बात है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंडक्ट एन एक्टिविटी, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड. मेरे पास एक मैजिकल बॉक्स है, है ना मेरे पास. देखिए सबसे पहले मतलब मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन अभी मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ बच्चों को. तो सबसे पहले मुझे लगता है एज अ टीचर क्लास का माहौल अच्छा होना चाहिए. When you enter in the class, your smile reveals so many things. अगर आप डेंजरस मूड में गए, लड़बड़ के आए घर पे मार-वार खा के,
then definitely student is not going to cooperate. वो सीखेगा नहीं, बिठाए रखो 1.5 घंटा बट सीखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट, आपको कनेक्ट करना है उससे। अब कनेक्ट कैसे होगा? चलिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। So I will call few students over here. इसके अंदर क्या है अभी इनको नहीं पता, मैं यहीं से भोजनालय से उठा के कुछ गुड़ा भात करके लाया हूँ। So let me see what they will do. I will call one by one. Tanya, please come. Take something out, whatever you feel comfortable, but you can't see. So this is Tanya, an amazing student of my class, studied in 11th B. My God. Hold this time. Good evening. Yeah. Now Tanya will speak about this particular fruit for at least 30 seconds. Tanya, go on. Good evening everyone, I'm Tanya. So my prop for today activity is an orange. Just look at it, how it's look too fresh, plump and tempting. If it wouldn't be a prop, I could have eaten it for sure. So being a science student, I could tell you a lot of benefits of it, but as it is an English activity, I would keep it short, okay? So it's a citric food and it's very good for skin. Today a lot of dermatologists use this in their creams to reduce pimples and all. So that's all I would like to say about it. Thank you. If you want to, we'll give a big round of applause for this lovely student of mine. You can taste it also. Yes. Yes, I have already told you that if it wouldn't be a prop, I could have eaten it for sure. Sir is offering you. You can take it. Thank you so much. Okay, now the second student I would like to call. Let's have a boy from here. Who's that? Ayush, please come. So we are having Ayush ji. It's going to be a surprise, and whatever you will get apart from my cell phone, you will have it. Apart from my cell phone. Good morning, good evening to all, and this is the English newspaper, and as I can see, this is the Hindustan Times newspaper, which is the most selling newspaper in our whole India, and as I can see, it is the 17 Feb newspaper, but it is the newspaper, but I want the newspaper of February 21. And as we can see, it is the most important thing in our whole daily life, and which all we know that if we read English, we can also speak English very well. So that's all I can speak here. Thank you, Ayush. You can also carry this one. I am sorry you weren't enjoyed, but Tanya was having orange. I want to tell you that in our life, proverbs, idioms, मुहावरे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इंग्लिश में एक ऑरेंज में मुझे मुहावरा याद आ गया देख के, एप्पल एंड ऑरेंजेस मींस कंप्लीटली अलग। तान्या एंड सिमरन, यू बोथ आर फ्रेंड्स, बट यू बोथ आर एप्पल एंड ऑरेंजेस। नाउ दिस इज योर्स। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स हैव निकिता, प्लीज कम। लेट्स सी व्हाट्स योर सरप्राइज। फील इट, दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। माय गॉड। Okay, so first of all, good evening everyone. I'm very happy to have this as my prop. So as you can see, it is an apple. It's very fresh, it's red, and it's very tasty. It's looking very tasty. And if I talk about apples, apples are citrus, as I have learned in chemistry, as I am a chemistry student, and it has a pH level of 4. As we performed an earlier activity, I came to know about it. And if I talk about apples, there is a saying which says, an apple a day keeps the doctor away, because it has many good qualities in it. If you have an apple per day, it will be very beneficial for your health. So that's it. That's what I would like to talk about it. So thank you very much. Tanya, can I hold it? Please stay here. एप्पल पे भी बहुत अच्छे मुहावरे हमारे पास, जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Apple of one side, आंखों का तारा। तान्या, you are just like my daughter, and you are apple of my eye. Apple and oranges मैंने आपको बता दिया, तो 3 चीजें हो गई। You can take it. Thank you. And इन्होंने बताया, एक कहावत बताई आपको, एक proverb, an apple in a day keeps the doctor away. अब ये तो मुझे पता नहीं ठीक से, मैं डेली खा रहा हूँ, बट फिर भी जाना पड़ता है मुझे। चलिए next, केशव please come.
Whenever I take the name of Keshav, it terrifies me a bit because that is the name of my principal sir as well. Keshav is having my cell phone. Good evening everyone. As you saw that I got a cell phone of mine, sir. That means I can't take it to my home as other students. I would like to tell you about a phone that it looks quite slim and it is black in color, which is my favorite color. And nowadays a mobile phone is very favorable for us. In COVID situation, we all having work from home by using this. Thank you. Thank you. I'll take it back. Thank you so much. Now next one, Simran. Please come. Simran, what you got? Banana. I got. So it is a banana, and I want to ask how many of you like this? No one? Nobody is raising it. Oh, so many. Because it is my favorite food, not food. It is my favorite fruit, and I know it is. It is squeezy and its color is yellow, and I seriously like it, and I always try to have it like a shake, like banana shake, and with milk too. So it is banana and it is my favorite too. Thank you so much. Please, Simran, come here. Banana, you'll get it. No issue. That's a serious matter. Actually, what happened? You know, banana, it also has so many idioms and phrases. Like top banana, सबसे महत्वपूर्ण हस्ती. आपको बताइए. तो किसी को कहना हो that मैं पीयूजी को कहता हूँ, मेरे फ्रेंड है, you are top banana in the school, you are very important person. बनाना रिपब्लिक भी होता है. जी सर. And go banana, किसी चीज को लेके जुनूनी हो जाना, पागल हो जाना किसी के पीछे. So I hope when I will teach you English, one day you will go banana. Thank you. Well, one more candidate we will have. Who is that? One more. Okay. Ashish Tiwari, please come. Ashish Tiwari is very much conscious about mask. Even he starts eating with the mask. Good evening to all of you. As you all know that in my hand it is a potato. I would like to tell you some dishes of potato like dum aloo and etc. And my favorite dish is dum aloo, so I have told you. And I also want to tell you that potatoes, many idioms like sweet potato. Thank you. Idioms also you will tell. Then what I will do here? Okay, potato. You want it? No. Potato is also very very important. This is the king of veggies. And I want to tell you, आजकल बड़े पॉपुलर से वर्ड है. Couch potato एक वर्ड होता है. Couch potato का मतलब होता है दिन भर लेट के टीवी देखता रहता है. मेरे बड़े भैया बहुत डांटते थे मुझे, कहते थे पढ़ ले. But I used to be a couch potato. Well, उसके बाद दूसरा आप जानते हैं, दूसरा कौन सा होता है? Small potato. इसका मतलब छोटा आलू नहीं. कोई मामूली बात, कोई मामूली आदमी हो, तो हम बोलते हैं उसको, हेलो, who are you? You are a small potato in front of me. तो small potato का मतलब छोटा आदमी. स्वीट पोटैटो इन्होंने बताया. और एक वर्ड होता है हॉट पोटैटो. कठिन स्थिति, विषम परिस्थितियां, कुछ भी हो सकता है, मुश्किल सिचुएशन. किसान प्रोटेस्ट इट्स टर्निंग आउट टू बी अ हॉट पोटैटो दिस डेज. तो उसे गर्म आलू नहीं समझना हमको, हमें उसको ये वाला आलू देना है. चलिए एक और जोक सुनाता हूँ. फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. आफ्टर दैट आई विल टेक अ लीव. मैंने यहाँ तो यहाँ पे मैंने दो लेटर्स बनाई हैं. इसमें इस टीम से और इस टीम से दोनों से स्टूडेंट जाएंगे वन बाय वन. इट वुड बी एन एक्टिविटी ऑफ ओनली 1 मिनट. मैं बीच में कुछ भी लिख दूंगा, स्कूल लिख दूंगा. स्कूल से रिलेटेड जो वर्ड्स आप जानते हैं यू हैव टू मेंशन विद करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग इज रॉन्ग, 0 मार्क्स. ओके. सो वन कैप्टन वुड बी देयर. Nikita, you are the captain, and from this side Ayush, you are sitting on the first seat, so you are the captain. Now I want you people to write vocabulary related to words related to nature, personality, and behavior. शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे. तो आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं जो रिलेटेड टू नेचर, पर्सनैलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ पीपल. आई विल गिव यू 1 मिनट, so go fast and come fast. Your time starts now. Hurry up.
तब तक मैं आप लोगों की एक एक्टिविटी करा लेता हूँ। बैठे बैठे करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए सर, हम किसी ना किसी के बराबर बैठे हैं। अब कोई अच्छा लग रहा है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी के फीचर्स अच्छे हैं, तो बस बराबर वाले को मुस्कुरा के बोल दीजिए यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे। आप जो वर्ड चाहें वो आप बोल सकते हैं। मैं मेरे मित्र को बोल देता हूँ पीयूष सर को, सर यू आर सो स्मार्ट सर। You too. 5 seconds. Time up. Time up. Time up. Time up. It's okay. Let me check. The first word is versatile. Who wrote it? Meaning? Sir, it is the Bahumukhi Pratibha person. Sir, Okay, it's okay. Sit down. बस बता के बैठते जाओ. Next, gullible. बोला वाला. Next, rude. असभ्य. Next, smart. तेज. Next, genius. अलौकिक बुद्धिमान. Meek. दयालु, Pessimist. निराशावादी, Optimist. आशावादी, What is this? I don't know. Next, humble. That's correct. Okay, next. Taciturn. Next. A person who speaks less. Okay. Next. Lachi. Ready. Gorgeous. Next. Okay. Introvert. Next. Loud. तेज बोलने वाला. Fantabulous. शानदार. Stone-hearted. पत्थर दिल से. Crazy. जुनून रखने वाला. Smart. Last one is humble. Common. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. And this team 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girls are leading from the front as usual. मैंने काफी कोशिश की. Boys कभी कभी आगे आ जाए. कभी तो एक साल लड़कियां टॉप करते CBSE और एक साल लड़के, पर इनका बातचीत बनी नहीं आपस में. So girls leading from the front, Nikita and Ayush, I would like you people to come and मैं चाहूँगा कुछ सेंटेंस आप ऐसे बोल दें सारे वर्ड यूज होते हैं. Nikita, you first, please come. It's an art of using. Okay, so I have to use these words in a sentence or a phrase. So I would like to use it for the people here, the teachers and my friends. So for the taciturn, I would like to say our principal sir, he's a taciturn. And for greedy, there's no one greedy. None of our teachers are greedy. And for gorgeous, I would like to say Shweta ma'am is sitting there. She's very gorgeous. And as an introvert, I am an introvert myself. Loud, I have my friend Keshav. He is a loud person. Fantabulous, I have Tanya as my friend. She is a very fantabulous student. Stone-hearted, I don't think anyone is a stone-heart in my class. Crazy, there is no one crazy, but we sometimes get crazy about things and possessions. Then we have smart. I would like to say Mr. Deepak Sharma. He is a very smart teacher. You're right. And as for humble, I would like to say all our teachers are very humble. Thank you very much. Thank you, Nikita. Very well done. Ayush, please come. Now he is the victim of experiential learning. He is feeling the pressure of that girl. Please. I experience Deepak sir is our versatile personality, and our principal sir is gullible in nature. And I did not found any rude person in this school because I am new student in this school. And smart, which is repeated in girls, I found that Keshav is very smart. And genius. I think the Shreyansh, which is not present here, is very genius student. And meek. Our principal sir is also a meek person. Pessimist and Ashmit Verma, which was a pessimist person. And optimist. Ashish Tiwari, which is a optimist person. Temper. And our some teachers in some schools get their temper high. And humble. We have to humble in nature. ये डिसीजन में प्रिंसिपल सबसे बोलता हूँ, छोड़ता हूँ, ये किसने अच्छा बोला? सर, it's of 4 marks. आप जिसको कहेंगे मैं दे दूँगा. सर्वाधिकार आपको दे दिया. Today what happened? I got late coming here. आज मैं आने में लेट हो गया. सर का फोन पहुँच गया. Experiential learning. Felt the pressure. चलिए ठीक है. I will give Ayush 3 marks to you.
Nikita, 3 marks to you. So Nikita, your team scored 13 and your team scored 12. So thank you so much for tolerating me. It was really wonderful to be in front of you. When sir told me that you have to perform, I actually wanted to come here. And this was really, thank you so much. I really enjoyed. सैनिक ताल तो बनती है, सैनिक ताल करो।